The statement made by Shri Mohan Bhagwat is completely a bogus statement, because Shri Mohan Bhagwat knows very well that the Chinese PLA army is right now sitting in Indian territory, in Hot Springs, in Demchok and in Depsang. The Chinese army is sitting in Indian territory. What is he talking about? He's Prime Minister of India, who has ideologically he belongs to RSS. He is the Prime Minister of our country, is afraid even to use the word China. I want Mr. Mohan Bhagwat to say this. If he is a true nationalist, Shri Mohan Bhagwat should say that the Chinese PLA is sitting in Indian territory. Our Indian army is not able to patrol those areas which are Indian territory, whether it's Depsang, Demchok and Gogra, Hot Springs. The government of India headed by Mr. Modi is keeping quiet. What is Mr. Mohan Bhagwat talking? And secondly, if he says we should not rely on China, who brought demonetization and destroyed the economy? Who is responsible for the state of economic affairs in our country? It is the Modi government. What is he talking about? Is he living in reality or not? Is Shri Mohan Bhagwat able to see the sufferings of the common people of India because of the wrong economic policies of the Modi government? That is why I say that his statement is completely bogus. Mr. Mohan Bhagwat is not able to say the truth, and the truth is that the Chinese army is sitting in Indian territory. The grave economic situation, the manufacturing which has gone down in India is only because of the wrong economic policies taken by the government headed by Shri Narendra Modi. And who did demonetization? Demonetization is the biggest cause of present economic problems which the Indians are facing. Sir, your reaction on Afghanistan situation? See, my reaction on Afghanistan is that India should have had a dialogue, should have opened some sort of informal or formal talks with Taliban, which we lost time. We had, for reconstruction of Afghanistan, India has spent nearly $3 billion. We have constructed the Afghani parliament, which was inaugurated by Shri Narendra Modi with Ghani over there. Salama Dam is India's money. Scholarship for various Afghani students to study, to come to India. What has happened with all that thing? $3 billion we have invested. And now Taliban is in complete control of full Afghanistan. We have no communication, no dialogue, no talks with them. All international or security experts have said that this should have been done, which for last 7 years the Modi government has completely failed to read what is happening. My biggest problem is that there are many ungoverned spaces in Afghanistan. That is a serious worry. That is a grave worry for India. Al-Qaeda and ISIS have moved their core headquarters and recruitment. They have shifted from Iraq and Syria to Afghanistan. Jaish-e-Mohammed is now entrenched in Helmand area. All these spaces are, which are ungoverned spaces in Afghanistan, will now be used for Al-Qaeda, ISIS, and Jaish-e-Mohammed. So, America, as a superpower, so-called superpower, they have to send 3,000 Marines only to pull out their embassy staff. Can you imagine what is going to happen? So that is why I feel that, the Modi government had wasted the 7 years. I had raised this issue in Parliament. I was scoffed, I was criticized when I said we should speak to Taliban. We know what Taliban stands for. We don't agree with their methods and their aggressive policies. But can you imagine, in all those ungoverned spaces, if Jaish-e-Mohammed, Al-Qaeda, ISIS, experts are saying, not me, the experts are saying that the ISIS and Al-Qaeda have now shifted their bases from Iraq and Syria to Afghanistan. So it is definitely a huge problem. This problem can become a bigger in future. So we don't know. I don't know what the government is going to do. Right now, I think so the immediate priority is to evacuate all Indians, our embassy staff who are stuck over there.
श्री मोहन भगवत साहब ने जो बात कही कंप्लीट बकवास है। श्री मोहन भगवत साहब अगर अपने आप को नेशनलिस्ट बोलते हैं और मानते हैं तो वो ये क्यों नहीं अपनी ज़बान से कहते कि भारत की ज़मीन के ऊपर चीन की फ़ौज कब्जा करके बैठी है। आप बोल रहे कि चीन के सामने झुकना नहीं चाहिए। अरे हमारी ज़मीन पर चीन डेप्सांग में, डेमचौक में, हॉट स्प्रिंग्स में, गोगरा में चीन की फ़ौज बैठी हुई है। आप क्यों नहीं बोलते इस बारे में? आप तो हमेशा 24 घंटे दिन के आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आरएसएस। तो फिर ये राष्ट्रवाद क्या है? आप बोलते नहीं चीन के बारे में। प्रधानमंत्री से कहिए ना, जो अपने आप को बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं आरएसएस का हूं, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? प्रधानमंत्री तो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और अगर आज भारत की इकोनॉमी अगर बर्बाद हो चुकी है तो जिम्मेदार कौन है बताइए? 7 साल की किसकी सरकार है? और अगर आज हमारी इकोनॉमी इस हालत में है तो सबसे बड़ा तो गलती तो श्री नरेंद्र मोदी ने की डिमोनेटाइजेशन का फैसला लेकर। डिमोनेटाइजेशन अगर नहीं लेते तो आज इतनी हमारी इकोनॉमी बर्बाद नहीं होती, खराब नहीं होती। 7 साल से आप सरकार में और आज आप बोलते हैं ये करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। अरे सब चीज़ तो आपने ख़राब कर दी ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका ये जो बयान है श्री मोहन भगवत का बिल्कुल गलत है और बकवास है एकदम। सर, अफगानिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं, अफगानिस्तान में भारत ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $3 बिलियन वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, अफगानिस्तान में सलमा डैम हमने बनाया, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी। ईरान से चाबार पोर्ट को हम बना रहे थे जो वहाँ पर ट्रंप ने सैंक्शन लगाकर काम रुका दिया। मगर 7 साल मोदी सरकार, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी आप 3 साल उसमें शामिल कर लीजिए, और हमारा एयरक्राफ्ट वहाँ पर भारत से उसको हाईजैक बनाकर हॉस्टल जाकर कंधार में रखते हैं। 7 साल में क्या किया आपने बताइए? क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? आपने क्या किया बताइए? आज पूरे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अल-कायदा और आइसिस सीरिया से, इराक से अपने रिक्रूटमेंट के बेसिस को शिफ्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को अनगवर्नड स्पेसेस में। दूसरी बात यह है कि वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान में हेलमंड प्रोविंस में वहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को 3000 अपने मरीन्स को उतारना पड़ा सिर्फ अपने एम्बेसी स्टाफ को निकालने के लिए। तो ये तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमारा सवाल मोदी सरकार से है। और ख़ुद आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक मेंबर ने ट्वीट कर दिया कि हमारे भारत के 3 पड़ोसी मुल्क एक होकर भारत पे हमला कर सकते हैं। मैं उनका नाम डेलिबरेटली नहीं लेना चाह रहा हूँ। ये बताएं आप क्या करने जा रहे हैं? क्या होगा? इस पर कोई नहीं है। और ये बड़ा क्वाड हम बोलते हैं अमेरिका से क्वाड। अरे अमेरिका ने तो क्वाड में तो भारत को दूध से मक्खी निकाल के छोड़ दिया। अमेरिका ने उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से एक ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया काबुल तक, जिसमें भारत ही नहीं है। तो हर एतबार से ये आज ये हालात पैदा हुए। तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? क्या हमने $3 बिलियन जो इन्वेस्ट किया रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्या उसका हम भारत को फ़ायदा मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला। सर, जो लोग वहाँ फंसे हैं, यकीनन सबसे बड़ी प्रायोरिटी सरकार की ये भी है, जो हम सुन रहे हैं, अच्छी भी चीज़ है कि जो हमारे एम्बेसी के स्टाफ हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको निकालना है, ज़रूरी निकालना। और हमको निकालना ज़रूरी है, वो फंसे हुए हैं। और उसके बाद फ्यूचर में मोदी सरकार क्या करती है नहीं मालूम, कि एक से एक बड़े से बड़े दानिश्वर एक्सपर्ट इनके पास है, मगर क्या निकला भाई? क्या ये हालात ऐसे इतनी जल्दी ऐसे कैसे पैदा हो गए?